Congress parliamentarian and Assam Congress Committee President Ripun Bora has given a 0-hour notice over flood situation in his home state. The Congress MP has given the notice in the upper house of the Parliament Rajya Sabha. On Monday, Bora, while protesting in front of the Mahatma Gandhi statue in the Parliament premises, pitched that the flood is declared a national problem and sought immediate release of central assistance for the victims. This Lok Sabha and Rajya Sabha, we have staged this demonstration today to bring to the notice of the entire country as well as to the BJP government that this indifferent attitude, this insensitivity of the central government, stepmotherly treatment of the central government to Assam. He also slammed the government over the failure of providing assistance like relief camps and medicine, drinking water. आप लोगों को सरकार की तरफ से कोई रेस्क्यू आया? नहीं, कोई आदमी नहीं आया। कोई आया नहीं? कोई आया नहीं। हम कोई सहायता मिला? हम मंडल का साथ फोन किया, लेकिन फोन रिसीव नहीं किया था। 2 दिन से ऐसा है? नाव भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उन लोग को भी खाना पीना भी बंद है। कितने दिनों से ऐसा है? हाँ? कितने दिनों को उन लोग फंसा हुआ है? कल से। कल से? हाँ, 2 दिन। 2 दिन से फंसा हुआ है? हाँ, 2 दिन से फंसा हुआ है। वो लोग निकल नहीं सकता है। रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग जल्दी से कुछ कीजिए। हमारा जो आदमी है वो लोग खाना पीना नहीं है, अभी पानी, विशुद्ध पानी भी नहीं है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी से आप लोग दीजिए, इधर में राशन दीजिए। रिलीफ कैंप का कोई व्यवस्था हो रहा है? रिलीफ कैंप का अभी तक व्यवस्था नहीं हुआ, लेकिन हम लोग तो थोड़ा 2-3 जो घर है उधर में एक जगह में रख के उसमें हमारा समाज से वो रिलीफ दे रहा हूँ। 6 districts are affected, 4 lakhs people are displaced now, and the people are taking shelter on embankment. No relief camp has been opened, no rescue is there, no medicine, no drinking water. Even the government employees are also busy with NRC work. Nobody is there to oversee the flood situation. So, and this central government for the last 2 years, this CRF, Central Calamity Relief Fund, and Disaster Management Fund, this has also not been released to Assam. The monsoon floods in Assam claim another life, taking the number of deaths in the rain-ravaged state to 11. Official sources said that over 26 lakh people have been affected in 25 of Assam's 33 districts so far, and the situation will only get worse amid predictions of more rainfall in the hours to come. The rescue efforts are being led by the National Disaster Response Force, which is actively evacuating people residing in the low-lying area to relief camps across the state. तो 3-4 दिन से पहले ये बार बहुत भारी बार हो रहा है, बारिश भी भारी और बार बहुत माने बाहर का परिस्थिति बहुत खराब है। वे लोग का ये वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है, वाटर रिसोर्स का डिपार्टमेंट की जो इंजीनियर है वे लोग को भेजना चाहिए ताकि इमरजेंसी प्रोटेक्शन कर सकते। मतलब मैं एमसीएलए होने से भी मैं तो अपोजिशन का एमसीएलए हूँ, रूलिंग का नहीं है। हम लोग रिक्वेस्ट कर सकता है सरकार को, लेकिन वे लोग अगर मान गया तो मान गया, लेकिन हम लोग तो ज़बरदस्त नहीं कर सकता है। हम लोग ये इसके बारे में हम लोग जानकारी दे सकते हैं। Meanwhile, the Additional Chief Secretary of Assam Home, Political Revenue and DM Department, Kumar Sanjay Krishna, had said that an amount of rupees 56 crores have been released to different districts to help flood-affected areas. In Assam State Disaster Management Authority report of the 28 affected districts, Barpeta is the worst hit with 7.35 lakh people affected, followed by Morigaon, where 3.50 lakh people are hit. They are followed by Dhubri, where the number of the affected is 3.38 lakh. Bureau Report.